Good morning, students. Welcome to online platform of Shri Academy. Today we are going to study continue the chapter, The World in a Wall. Yesterday we went through the word meanings so from the last paragraph we have to start. Provided you did nothing silly or clumsy like putting your hand on one, the scorpion treated you with respect, their one desire being to get away and hide as quickly as possible. They must have found me rather a trial. Rather a trial means the meaning is given. Here, someone who creates difficulties. For I was always ripping sections of the plaster away so that I could watch them. So, as we know, the writer is very fond of scorpions. He always keeps on ripping the sections of plasters so that he could watch the scorpions, and he says that scorpions treat you very respectfully. They just want to go away and hide as quickly as possible. Capturing them and making them walk about in jam jars so that I could see the way their feet moved. By means of my sudden and unexpected assaults on the wall, I discovered quite a bit about the scorpions. Now, the writer is saying that he likes to capture the uh, scorpions and keep them in jam jars so that he can see them moving in the jars. By means of my sudden and unexpected assaults on the wall, I discovered quite a bit about the scorpions. और राइटर यहाँ बताते हैं कि उन्होंने हमेशा जो वो दीवारों को खोल प्लास्टर हटा करके खोद करके स्कॉर्पियंस को देख करके बहुत कुछ उन्होंने स्कॉर्पियंस के बारे में जाना. I found that they would eat blue bottles. Through how they caught them was a mystery I never solved. उन्हें क्या पता चला स्कॉर्पियंस को कि वो ब्लू बॉटल्स को खा जाते हैं, और दो हाउ दे कॉट दैम वॉज, और वो उन्हें कैसे पकड़ते हैं ये उन्हें नहीं पता था. ग्रास हॉपर्स, moths and losing flies. Several times I found them eating each other, a habit I found most distressing in the creature otherwise so impeccable, means faultless and perfect. That means here the writer is saying that the scorpions eat grasshopper, moths, losing flies. He eats this kind of small insects, and this was the habit that he did not liked about scorpion. By crouching under the wall at night with the torch, I managed to catch some brief glimpses of the scorpions' wonderful courtship dances. I saw them standing, claws clasped, their bodies raised to the skies, their tails loving intertwined. I saw them waltzing slowly in circles among the moss cushion, claw and in claw. But my view of those performances was all too short, for almost as soon as I switched on the torch, the partners would stop, pause for a moment, and then, seeing that what I was not getting to extinguish the light, they would turn round and walk firmly away, claw in claw, side by side.
So here the writer is saying that he was so fond of scorpions that sometimes in the night um, he used to light the torch in the wall, and what did he found? He found that scorpions dancing. That means they were enjoying with their families. So they were definitely beasts. They that believed in keeping themselves to themselves, और वो डेफिनेटली बीस्ट थे. दैट मीन्स कि शैतान थे, और वो अपने आप को अपने आप में ही रखना पसंद करते थे. इफ़ आई कुड हैव केप्ट अ कॉलोनी इन captivity, I would probably have been able to see the whole of the courtship, but the family had forbidden scorpion in the house, despite my arguments in favor of them. अब राइटर क्या चाहते हैं कि वो अपने घर में उनकी कॉलोनी बनाते हैं, और मतलब कि ढेर सारे स्कॉर्पियंस को अपने घर में रखते, फिर उनकी कॉर्टशिप को वो अच्छे से देख पाते. लेकिन उनकी फैमिली ने स्कॉर्पियन को घर में रखने के लिए मना कर दिया था, जबकि उन्होंने अपने आर्गूमेंट दिए थे उस फेवर में. फिर भी देन वन डे आई फाउंड अ फैट फीमेल, और एक दिन क्या होता है कि उन्हें एक फैट फीमेल स्कॉर्पियन मिलता है. कहाँ पे? इन द स्कॉर्पियन इन द वॉल, wearing what at first glance appeared to be a pale fawn fur cloth. Closer inspection proved that this strange garment was made up of mass of tiny babies clinging on the mother's back. अभी यहाँ पे क्या कहते हैं कि फैट स्कॉर्पियन मिला उन्हें, और उसने क्या पहना हुआ था? फर्स्ट ग्लैंस पे क्या लगता है? पेल, दैट मीन्स कलरलेस. फॉन फर क्लोथ पहना हुआ था. क्लोज इंस्पेक्शन से क्या प्रूफ होता है कि वो स्ट्रेंज गारमेंट जो था वो किसका बना था? मास ऑफ टाइनी बेबीज क्लिनजिंग इन द मदर्स बैग. और ये बना हुआ था मास ऑफ बेबीज़ का मतलब ढेर सारे बेबीज़ का जो उनके बैक पे थे. आई वॉज enraptured by this family, and I made up my mind to smuggle them into the house and up to my bedroom so that I might keep them and watch them grow up. और उन्होंने क्या, राइटर ने क्या प्लान बनाया कि वो उनको चोरी कर लेंगे. स्मगल दैट मीन्स टू टेक अवे, और स्मगल कर लेंगे और उसको अपने हाउस में रखेंगे, अपने बेडरूम में रखेंगे, जिससे कि वो टाइनी क्रिएचर्स को ग्रो अप करते हुए देख पाएँ. With infinite care, I maneuvered the mother and family into a matchbox. अब उन्होंने बहुत ध्यान के साथ उस फैमिली को अब मैच बॉक्स के अंदर रखा. एंड देन आई हरी टू द विला, और उसके बाद वो जल्दी से अपने घर की तरफ चल दिए. इट वॉज रैदर अनफॉर्चुनेट दैट जस्ट आई एंटर द डोर लंच शुड बी सर्व्ड. अब ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था उनके लिए कि जैसे ही वो घर के अंदर गए, लंच जो है सर्व हो चुका था. However, I placed the match box carefully on the mantel piece in the drawing room. और उन्होंने क्या किया कि मैच बॉक्स को बहुत केयरफुली कहाँ पे रख दिया? मेंटल पीस पे, ड्राइंग रूम में. सो दैट द स्कॉर्पियंस शुड गेट प्लेंटी ऑफ एयर, एंड मेड माई वे टू द डाइनिंग रूम एंड जॉइंड द फैमिली फॉर मील. और वहाँ पे क्यों रखा? ताकि स्कॉर्पियंस को सफिशेंट एयर मिल सके, और उसके बाद वो ड्राइंग रूम से डाइनिंग रूम में गए और अपनी फैमिली को खाने के लिए ज्वाइन किया. Dawdling over my food. Dawdling over my food means not eating properly. So, feeding Roger surreptitiously under the table and listening to the family arguing, I completely forgot about my exciting new captures. And now, उन्होंने क्या हुआ? फीडिंग रॉजर surreptitiously under the table and listening to the family
अब वो रॉजर को फीड कर रहे थे अंदर सीक्रेटली, और फैमिली के आर्ग्यूमेंट को सुन करके वो क्या हुआ कि अपने नए कैप्चर के बारे में भूल गए. एट लास्ट लैरी हैविंग फिनिश्ड फेच्ड द सिगरेट फ्रॉम द ड्राइंग रूम. और लैरी जो है उसने खाना फिनिश कर लिया और उसने क्या किया, सिगरेट को निकाला ड्राइंग रूम से. एंड लाइंग बैक इन हिज चेयर he put one of his mouth and picked up the matchbox he bought. और क्या करता है, सिगरेट को अपने माउथ में रखता है और मैच बॉक्स जो लेके आया था उसे ओपन करता है. ऑब्वियसली ऑफ माई इम्पेंडिंग doom, I watched him interestedly as, still talking glibly, he opened the matchbox, not aware that I was about to get into trouble. Why he was going to get into trouble? Because in the matchbox there was not matchsticks, it was a scorpion. Glibly means fluently. So he was looking him interestedly and talking very fluently. He opened the matchbox. Now he opened the matchbox. Who opened? The Larry. Now I maintain to this day that the female scorpions mean no harm. She was agitated and trifle annoyed at being shut up in Matchbox for so long, and so she seized the first opportunity to escape. She hoisted herself out the box with great rapidity. And now what happened? अब वो क्या हुआ कि मैच बॉक्स को लेते हैं, मैच बॉक्स को ओपन करते हैं और जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है मैच बॉक्स से निकलने की वो नहीं निकलते स्कॉर्पियन, और वो बहुत देर से वहाँ पे बंद होने की वजह से परेशान थी. और राइटर ये मानते हैं कि फीमेल स्कॉर्पियन जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है. हर बेबीज cleansing on desperately and scattered on the back of Larry's hand. और जब वो ओपन करता है लैरी मैच बॉक्स को, तो मदर जो है वो फर्स्ट केप के चांस को लेती नहीं है और वो रुकी रहती है. और सेकेंडली वो क्या होता है, बहुत ही जल्दी से निकलती है बॉक्स से बाहर, और उसके जो बेबीज़ होते हैं वो जल्दी जल्दी चल के लैरी के हैंड के बैक साइड पे स्कैटर फैल जाते हैं. They are not quite certain what to do next. She paused, her sting curved up at the ready. Larry, feeling the movement of her claws, glanced down to see what it was, and from that moment things got increasingly confused. अब क्या हुआ कि जो स्कॉर्पियन थी वो कंफ्यूज हो गई कि अब उसे करना क्या है. अब डाइनिंग टेबल पे सारा कुछ फैल गया था, तो जो स्कॉर्पियन थे उसने अपनी टेल उठा करके वो रेडी थी कि अगर उसे कोई हार्म पहुंचाएगा तो वो उसे बाइट करेगी. और लैरी जो है अपने हाथ पे वो क्लॉज की मूविंग को फील कर रहा था, उसे ध्यान से देखता है, और जब देखता है तो उसके बाद चीज़ें और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग बन जाती हैं. He uttered a roar of fright that made Luxia drop a plate and brought Roger out from beneath the table, barking wildly. अब क्या होता है, लॉक्सिया जो होती है वो जब लैरी चिल्लाता है ज़ोर से तो लॉक्सिया जो होती है वो डर से प्लेट गिरा देती है, और रोज़र जो होता है वो टेबल से निकल आता है, टेबल के नीचे से निकल आता है और बहुत ही वाइल्डली भौंकने लगता है. Okay students, this is for enough for the day. The remaining portion of the story will be covered in the next video. Thank you. Keep watching the videos. Have a good day.